Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into yet another episode of the Hot No. Review. Hang on. It's not something hot. It's not hot bites. It's No. Oh, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm here, honored, privileged कि जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ. एक तो मैं उनको आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हर. हमारा जो लाइन ऑफ प्रोफेशन है जर्नलिज्म का, उसमें मेरी सीनियर भी हैं और एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो माशाल्लाह विद सच अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क एंड सच एन अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट, उनके साथ काम करना, उनकी सोबत में रहना, in itself it's a personal accomplishment and I'm very privileged and honored कि आज इस अजीम मौके पे कि जो कि उनका योम पैदाइश है, उन्होंने ये फैसला किया कि एक प्रोग्राम करें मेरे साथ जिसमें मैं उनसे कुछ सवाल करूँगा. सो सबसे पहले तो आमना अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी 50th. थैंक यू हसन. आप एकदम, आपकी एनर्जी वहाँ वेलकम टू समथिंग हॉट से आप उस पे आ गए, सोबर उस पे. क्योंकि मैं किसी का गेस्ट हूँ आज. ओह अच्छा, ओके. किसी का लेकिन गेस्ट ये आपका शो है, आप होस्ट कर रहे हैं. मैं होस्ट हूँ. हाँ. तो मैं गेस्ट होस्ट हूँ. गेस्ट होस्ट है. आई एम अ गेस्ट होस्ट एंड आमना आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो. एंड आई एम श्योर कि आज गोल्डन जुबली जितने हमारे व्यूवर्स हैं, देयर ऑल सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस. May you always keep smiling. May Allah always keep you happy, blessed, healthy. Thank you. और अल्लाह करे कि आपका साथ हमारे साथ, आपके फैंस के साथ, आपके व्यूअर्स के साथ हमेशा बरकरार रहे. आमीन. अपनी सालगिरह के मौके पे सबसे पहले कोई आप खास कोई पैगाम देना चाहती हैं? मैं नहीं को खास पैगाम देना चाहती. मेरी 50th बर्थडे है और गोल्डन जुबली सा लग रहा है मुझे. और फेस्टिविटीज मैंने सोचा है कि मैं पूरा हफ्ता बरकरार रखूंगी. क्यों नहीं आपको कौन रोक सकता है? रखने तो 50 दिन तक चाहिए, लेकिन वो ज्यादा जरा सा अंबानी लेवल चला जाएगा फिर सेलिब्रेशन. तो मैंने कहा कि ठीक है, बट गुड टू हैव लाइफ सराउंडेड विद गुड फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, यू नो. अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट टू बी ग्रेटफुल फॉर. माशाल्लाह. अच्छा, अब चूंकि इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि दोबारा अच्छा, अब चूंकि इस शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपसे कुछ सवाल जो भी आपके गेस्ट होस्ट जी, आस्क आमना है शो का नाम आस्क आमना है. और आपसे जो भी गेस्ट आते हैं, होस्ट होते हैं, वो सवाल पूछते हैं. जी. और आपने बड़े काइंडली एग्री किया कि मैं कोई भी सवाल आपसे जी बिल्कुल. आप उसका जवाब आपने सिर्फ एक रखी थी रूल आपका. हाँ. कि मेरी एक डिमांड है कि कुछ कटेगा नहीं. हाँ. ये मैंने कहा अगर किसी सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहूंगी तो मैं आपको कह दूंगी कि आप इनकार कर रहे हैं. आप बोले मैं जवाब देना नहीं चाहती. लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी ये कॉन्वर्सेशन एज इट इज आप रखें. और आमना ने बड़े काइंडली ये मुझे इजाजत दी है, क्योंकि आई वुड लाइक टू बिलीव एंड थिंक दैट आई एम वन ऑफ आमना's closest friends and one of the few people who know आमना perhaps the most. जी. So मुझे आमना ने इजाजत दी कि मुझसे कुछ भी मैं बड़ी क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि आप कहाँ तक वेंचर करेंगे अपने सवालात में. सबसे पहला जो मैं आपसे सवाल, क्योंकि हमारे बीच में कोई वो नहीं हमने कोई नोट्स एक्सचेंज नहीं किया. मैंने मुझे कहा मैंने ये करना है, मैंने कहा मैं आई वुड लव टू डू इट. अब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस मुनासबत से कि माशाल्लाह you've hit 50. Are you happy? Yes, very. Am I happy? Very. I'm very grateful. I'm very happy in my personal life. I'm very happy with the way my children have turned out. I'm very happy that I feel that I am a good child to my parents. I am very happy that my parents are so healthy and mashallah independent, and my brother is doing well. So all my loved ones, I'm very happy that professionally I'm still sort of with it. I feel ऐसा नहीं है कि I'm on a downward curve at all. I feel Allah na kare. And so yeah, in that respect I'm happy, and lots of spiritually I feel I'm very happy. I'm in a very stable place, mentally, emotionally, all of that. There's no such thing as 100% happiness. वो तो फिर मतलब मर के ही बंदे को मिल सकती है, you know, absolution. But as far as life is concerned, how happy can you get? I think I'm very grateful. माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. जी. So आज से अगर हम 31 साल पीछे चले जाएं, when you were 20. Okay. एक young
जी एनर्जेटिक, जी एम्बिशियस, जी 20 साल की लड़की के बहुत सारे ख्वाब मैं होते अभी हैं। भी यंग और एनर्जेटिक और एम्बिशियस एम्बिशियस है आप, दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। या बट जब आप 20 साल के होते हैं तो जी आपके ऑब्वियसली जो स्पेशली हमारे लड़कियां होती हैं, हमारी सोसाइटी की लड़कियां, उनके बड़े ख्वाब होते हैं, उनके सपने होते हैं कुछ जिनको वो अचीव करना चाहती हैं। 20 साल की आमना ने जो अपने लिए गोल सेट किए थे, जो अपनी लाइफ इन्विजन की थी, आज 50 साल की आमना व्हेन शी लुक्स बैक एट दोस 30 odd years, does she feel accomplished? Does she feel she's achieved what all she set to achieve? Hell yeah. Hell yeah. Absolutely. Absolutely. I think 20-year-old Amna was very limited vision थी बहुत। अच्छा। एक लिस्ट थी मेरे पास कि मैंने ये चीज़ें accomplish करनी है। माइंड शेयरिंग? अब जी जी मैंने ये सोचा था कि मैं 23 पे अपनी मास्टर्स करूँगी, वो मैंने किया 22 पे 21 हाँ। जब मैंने सोचा था कि मेरी मंगनी होगी तो वो हुई, जब मैंने सोचा कि मेरी शादी हुई थी तो वो हुई। अच्छा जी मतलब जब आपने एज इन जब जिन टाइमलाइन में सोचा जो मैंने टाइमलाइन सोची हुई थी कि एट दिस एज आई वांट टू बी मैरिड, एट दिस एज आई वांट टू हैव माय फर्स्ट ये चाइल्ड। हुई बाय स्ट्रोक ऑफ लक, यूनिवर्स कंस्पायर्ड हुई Obviously, या obviously. आपने कुछ की नहीं तगदो? मैंने कुछ जगदो नहीं की, वो खुद से ही हो गया, बहुत ही खुद से हो गया। और आपने मैनिफेस्ट किया? मैंने मैनिफेस्ट दुआ किया, की और मैनिफेस्ट दुआ की। मैंने पहला बच्चा जो था वो भी सोचा हुआ था कि मैं एट द एज ऑफ 24 आई वांट टू हैव माय फर्स्ट चाइल्ड व्हिच आई डिड। एंड वहाँ से आगे फिर मेरी कोई लिस्ट नहीं थी उसके बाद। हाँ हाँ प्रोफेशनली सेकंड बेबी से मैं उसके बाद जो सोचा था वो नहीं हुआ। मेरा ख्याल था कि दूसरा बच्चा मेरा बेटी होगी, वो नहीं हुई, ठीक है। वो मुझसे पैदा हो गया। और उसके बाद मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, बट नो कंप्लेंट्स, अल्लाह नोज बेस्ट एंड ही हैड बेटर प्लान्स फॉर मी। प्रोफेशनली आपने क्या गोल सेट किए थे अपने लिए एंड वर यू एबल टू अचीव दोस गोल्स? या एब्सोल्युटली। I mean, I know for a fact that beyond expectations आप beyond गई हैं, but expectations. आपका गोल क्या था? What did you want to be? I started working, Hassan, when I was 17, and Yeah. at 50, at 33 years, I have not stopped और worked through and जो goals थे, कभी ये नहीं था कि इतने पैसे बनाने हैं। ये 10 साल पहले करना शुरू किया था कि okay, I have to make this much money. उससे पहले नहीं था, but yeah, interviewed the people that I wanted to interview, went and covered things that I wanted to. Of course, there's always more that you can do, but am I like grateful for what? Yeah, absolutely. If Allah may gives you a choice today, I can take you back in time and कुछ चीज़ें हैं जो पिछले 30-40 सालों में जो हुई हैं वो डिफरेंटली हो सकती हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपका प्रोफेशन तब्दील हो सकता है। जो माइलस्टोन्स आपने अचीव किए हैं मुख्तलिफ हो सकते हैं। वुड यू वांट एनीथिंग चेंज्ड? I'd have wanted some video coverage of my interview with Shah Rukh Khan. I would have liked to have Instagrammed my interview with Hrithik Roshan in his house on Diwali. Okay, I would have liked to have covered those fashion weeks in India on in reels and videos where I like interacted with 160 Bollywood actors, stars, I would say. Everybody from Amitabh Bachchan to Govinda to Amir Khan, I would have liked to do. So yeah, I would have liked to change that for sure. For sure. No, I think there's the beauty of why things happen at a certain time. There's always a learning in them. Yeah. And if had I not been through those things, I would not be here today. So at 50 now. Yeah. आगे के गोल्स आज आपने सेट किए हैं? आपने कहा यार कि ठीक है 20 साल की आमना के ये माइलस्टोन्स थे, जो लर्निंग आपकी हुई है इन सारे सालों में, अब आगे चलते हुए इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। गोइंग विद द फ्लो वाला सीन है या आपने सोचा है? नहीं, नेवर। गो विद द फ्लो कभी भी नहीं होता। अच्छा। नहीं, गो विद द फ्लो कभी भी नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है जो मेरा अल्टीमेट ख्वाब है वो शायद नहीं पूरा होगा। आपने वो फिल्म देखी है द इंटर्न, रॉबर्ट डे नीरो की? नहीं। एक फिल्म है इंटर्न जिसमें ये बंदा पोस्ट रिटायरमेंट ही गेट्स एम्प्लॉयड बाय अ यंग स्टार्टअप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म run by Anne Hathaway's character, who's in her 20s. So suddenly the 65-year-old gets thrown into an environment जहाँ सारे 20-somethings हैं जो roller skating कर रहे हैं और cycles चला रहे हैं, but they're professional and all of that. And he fixes their system जहाँ lapses होते हैं, and they fix him जहाँ lapses होते हैं. But जो उनका दफ्तर का setup होता है ना, it's like one big commune kind of a warehouse.
very cool light, very cool desk divisions, the creative department, marketing department, all of that. I mean, I would wish for an office like that, a kind of a setup for something hot like that, where we would have that setup where we're completely independent. ये तो professionally होगा. Professionally, Personally. no. Professionally, there's more. अच्छा, okay. Professionally, I would really I need to get down to writing my first book, for sure. उसके लिए आपने कोई timeline set की है? नहीं, I am originally a writer and I would like to. मैंने बड़ी देर बाद अभी एक article लिखा on मोहसिन नवीद रांझा, and I was struggling because मुझे 2-3 दिन लगे to actually bring my words from my head to paper, because लिखने की हमें आदत ही नहीं रही है, और very well aware of that. Yeah. So I want to get back to writing, and then eventually I also want to write a script. Interesting. Yeah. So yeah. And just write, not direct. No, I can't direct. That's not my forte. To write, yeah. Absolutely. प्यार क्या है आमना? प्यार क्या है? प्यार नहीं डिफाइन किया जा सकता. बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना. एक बड़ी मशहूर शख्सियत है मिसेस ब्रुगेंजा, उन्होंने कहा प्यार दोस्ती है. प्यार दोस्ती है. लव. बल्कि राहुल ने कहा प्यार दोस्ती है, मिसेस ब्रुगेंजा ने कहा यार बहुत अच्छी थॉट है. प्यार दोस्ती है. What an absolutely delightful thought. जी. प्यार दोस्ती है. जी. प्यार दोस्ती नहीं है. प्यार दोस्ती नहीं है. मतलब दोस्ती इज एन एलिमेंट ऑफ प्यार, मगर मेरे एक्सपीरियंस में प्यार और दोस्ती हैंड इन हैंड नहीं थे. प्यार मेरे लिए इज I don't know, it's just a feeling of wholesomeness. It's something that makes you feel complete. Whether it's love for anybody, any kind of love. It's something that makes you, like, दिमाग आपका दिल, आपके emotions, you just feel complete. I can't explain it. Like I said, for me, it's very indescribable. But because I've been in love, so I know that it's indescribable. You said I've been in love. Are you not in love? No, I'm not. Not the way I was at 21, 22. It's also an evolution. You can't be in love that way. I mean, maybe I am. I don't know. You know me better. Am I? I think probably one part of me still is. But not the way I was at 21. If you ask me, I think you are. You think I am? Yeah, maybe. Yeah. And now, since we're talking about love, and this is something you've publicly addressed. Yeah. And you've stated this publicly, that you and Haider Saab live separately. Yeah. But you're not divorced. No, I'm not divorced. No. You live separately. No. I don't want to get into those details, obviously, because that is something personal. But since you've already made this public, in regard to this, how do you view the institution of marriage? Shadi kya hai? Oh, it's beautiful. I think Shadi is a beautiful institute, and I endorse marriage completely. I want my kids to marry early. I think, like love, marriage makes you complete. And of course, no disrespect to people who don't want to get married. I mean, हर बंदे का अपनी एक perspective होती है. मेरे लिहाज से, I always wanted to be married, and I always want to stay married, because I just feel that it completes me as a human being. It gives me security. It gives me stability. I'm not on the edge all the time that, okay, I have to be in another relationship, or I have to look for something, or I have to look for love. I have love. I've done it. I've done the love. I'm in the marriage, and yeah. I think it's beautiful. If there's one advice you'd like to give to couples, Yeah. and I'm not saying young couples, couples, period. Married couples, on marriage, what would that be? Don't go with convention that is set by society. Make your own normal. There is, of course, a boundary, a periphery that your religion sets for you. So disloyalty or something is beyond that. But within the periphery, जो आपका मज़हब आपको देता है, उसके अंदर रह के आप वो करें जिसकी आपको इजाज़त है. और कन्वेंशन जो सोसाइटी आप पे इम्प्लीमेंट करती है, उसको ना फॉलो करें. ठीक है. मज़हबी दायरे में आप. मतलब I'll give you trivia that nobody knows, and you know, of course, but I haven't spoken about this. But I proposed to Haider, and I fell in love, and I proposed to him. And I asked my father, I said, I want to propose, and he said that your religion gives you full right. Why do you think it's not right? Go ahead.
तो वही था कि जो आपके मज़हब ने आपको जिस चीज़ की इजाज़त दे दी, जिसकी इतनी बड़ी आपके पास मिसाल है आपके मज़हब में, तो उसमें आपके ये सवाल ही क्यों उठता है कि ये अनकन्वेंशनल है या सोसाइटी देती है या नहीं देती. एंड इट वाज लाइक यू हैव फुल राइट टू. या क्या आपको इंतजार करना पड़ा हाँ सुनने के जी लिए? 1 साल. 1 साल. उस 1 साल में क्या चल रहा था दिमाग में? उस 1 साल में और क्यों, इफ यू डोंट माइंड आंसरिंग दिस, क्यों इंतजार क्यों करना पड़ा 1 साल? इंतजार इसलिए करना पड़ा बिकॉज आई थिंक हैदर वाज नेवर रियली suited for marriage, and it's some people are very reclusive, and he was a very independent, very reclusive person who just didn't want to be in a marriage. And so he was like, I'm not made for marriage, but good luck to you, and I wish you well. And I said okay, and I just waited. And of course I had a connection with God even at that time, even at 21, 22. And I said, and I kept praying कि अब मेरी बेहतरी हो तो करे, मेरी बेहतरी हो तो ये हो. फिर साल बाद हो गया. Of course other people intervened and all of that. माशाल्लाह Yeah, so. आमना, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है that you're an inspiration to जी, a lot of women, okay. also men. जी. You inspire me every day. और हम कोई भी वीडियो जब भी पुट अप करते हैं समथिंग हॉट पे, अदरवाइज ऑल्सो आही पे भी, हमेशा देर आर women, young girls, older women who say that they get a lot of courage when they see you, they get a lot of inspiration when they see you. Do you feel that responsibility on your shoulders now कि यार के एक बड़ी तादाद में लोग हैं, ख़वातीन हैं, स्पेशली यंग लड़कियां हैं, who look up to you और वो आपकी हर मूव पे नज़र रखी हुई हैं? Does that make you a little bit more cautious? Does that make you feel a little bit more responsible? Are you enjoying that? Do you like that? Or have you not given thought to it? No, I don't feel burdened or pressurized at all because I am what I am. जब किसी चीज़ पे बैकलैश आता है तो फिर मैं उस पर सोचती हूँ कि अच्छा मैंने क्या गलत किया and should I do this again? For example, I once wore a kurta that had Sanskrit on it. उस पर बहुत लोगों ने कहा कि आपको नहीं पहने and बहुत हेट्स आया. तो मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे. I don't need it. So वो मैंने कुर्ता पैकअप करके मैंने नहीं पहना दोबारा. Otherwise I would have worn it. But other than that, I am who I am. I mean, मेरा घर भी खुली किताब है, यहाँ पे हम लोग शूट करते हैं और आर्ट वर्क भी है और सब कुछ है और मैं बात भी वही करती हूँ जो मेरे दिल में होती है. ऐसा नहीं कि मैं छुपाती हूँ किसी बात को. So जो नज़र आ रहा है वही है. This is who I am. So no, I don't feel any pressure. Do I feel responsibility? Also no. I didn't. You don't feel responsible? No. I didn't set out to change the world or to change opinions. And if people are inspired by me, then I'd like to give them more of me to be inspired by. But do I feel like okay today I have to like no. अगर मैं उसमें चली जाऊंगी तो एजेंडा ड्रिवन नहीं है? नहीं एजेंडा ड्रिवन नहीं है. एजेंडा ड्रिवन बिल्कुल नहीं है. मैंने अभी लॉन्च किया. इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. आई गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक. पीपल लव्ड इट. मैंने यही सोचा कि पीपल आर वंडरिंग कि at this age if you can put yourself out there then anybody can. So I'm just happy that by default लोग इंस्पायर हो जाते हैं. मगर ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्पस है. आज तक का सबसे अच्छा कमेंट जो आपको आपके बारे में आया और आप अगर याद है आपको कि यार ये मैंने जब ये चीज़ आपने पढ़ी अपने बारे में आपको बहुत खुशी हुई, याद है आपको कमेंट, कोई बात? नहीं ऐसा एक कमेंट मुझे याद नहीं है. आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने एक इंटरव्यू दिया था डॉन अरोरा को अबाउट कपल ऑफ इयर्स अगो. तो उसमें अम्मी कुड रीड एट दैट टाइम. अब उनकी आईसाइट जो है बहुत कमज़ोर हो गई. शी हैज़ डिफ़िकल्टी रीडिंग. तो उसमें मैंने लिखा था कि जब उन्होंने पूछा था कि लाइफ में इंश्योरेंसेज आपकी क्या होती हैं, आप अपना बैंक अकाउंट फ्रीज एक फिक्स डिपॉजिट होता है, या आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, या आप पॉलिसीज़ ख़रीदते हो, या आप गोल्ड ख़रीदते हो, या आप पैसे जमा करते हो, प्रॉपर्टी जमा करते हो. ऑल ऑफ दीज आर लाइक टू सेफ गार्ड योर लेटर ईयर्स और वट एवर. ये आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी हिफाजत के लिए चीज़ें होती हैं. तो उसमें मैंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस जो है ना वो मेरा रिलेशनशिप विद अल्लाह है. That is my biggest insurance. So I remember when my mother read that, she called me and she said, I started crying when I read that I've raised you well. I was like, okay. But that's actually how I feel. MashaAllah. Yeah.
If I give you $1 billion today, Ooh, okay. Yes. what's the first thing you're gonna do? No, I'd go on a holiday. But that's it. You have $1 billion, and No, I would begin by going on like I would travel like first class and go to like I would go on a holiday for sure. And I had $1 billion. Yeah, I mean पहली चीज तो मैं ये $1 billion, billion रुपए नहीं मैंने बोले. मैंने मुझे मैं तो पता है $1 मैं billion बात हाँ तो पहली चीज हॉलीडे पे जाऊंगी ना फिर आके कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगी कोई घर शहर खरीदूंगी पहली चीज आप ये करेंगे $1 billion मिल गया तो मैं मतलब है कि हॉलीडे पे जाऊं. हाँ I'd probably take all my friends on a like a first class holiday. I'd take all my friends for a first class holiday. आप ये नहीं सोचेंगे ये $1 billion आ गया है इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ क्या करना है इसका कहूँगी छुट्टियों से हो क्या करना है रिश्तेदारों दोस्तों में कितने पैसे बांटने हैं ये कुछ नहीं मैं हॉलीडे पे मैं जाना पहले चीजें मैं हॉलीडे पे जाऊंगी फिर आके फिर ये चीजें सोचूंगी कि हाँ. और हॉलीडे पे कहाँ जाएंगे आप? ये नहीं पता probably around the world. पर उस हॉलीडे ताड़ा दिल है सारे पैसे मुक्की जाए उस हॉलीडे के बाद एक और हॉलीडे चाहिए होगी फिर. अच्छा आमना जी आपका क्योंकि फैशन से बड़ा जी गहरा ताल्लुक है और बड़ा अरसा आपने फैशन अभी भी आप फैशन जर्नलिस्ट भी हैं आप और एज अ फैशन जर्नलिस्ट आपने बड़ा काम किया है. योर फेवरेट 3 लुक्स ऑफ योरसेल्फ of myself. आज तक की शादी से लेकर ये तो हसन बहुत मुश्किल सवाल है. 5 बता दें. नहीं मैं अगर सोचूं कि क्या मुझे अपनी लुक्स कौन सी पसंद है नहीं ये वो क्योंकि हम तस्वीरें चलाएंगे यहाँ पे. मुझे बहुत मुश्किल सवाल. I really like the way I looked at my wedding. Number 1 तस्वीर I really liked it. आप हाँ तस्वीर में आप पे लगी भी है मेरे Instagram पे. आप तस्वीर I really liked the way I looked at my wedding. Okay. I really liked the way. In order of priority नहीं मैं in order of memories सोच रही हूँ कि कौन कौन सी looks मुझे अच्छी लगी. 5 बता सकते हैं आप अगर आपको. नहीं ये बहुत मुश्किल है. लोग बताएंगे कि उनको मेरी favorite नहीं यार आप एज अ फैशन जर्नलिस्ट योरसेल्फ अपनी लुक्स को कौन करता है. क्यों नहीं आपको बड़े लोगों को लगता है यार मैं उस दिन बहुत फिट लग रहा था मैं अपना आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. मैं आप पूछते हैं ऐसे मैं नहीं सोचती. ये आपने सवाल वो पूछा जो मुझे आपसे पूछना चाहिए. नहीं मैंने नहीं सोचा कभी भी ऐसे. यार होता है someday you look at yourself in the mirror and you're like यार. No, but you don't remember that day a year later. I could break a few hearts today. No, you do. You can feel that way today, but not. You can't remember this day next year. अच्छा कोई ऐसे स्पेशल रेड कार्पेट मोमेंट्स में से कोई शादियों में से कोई ये तो आप ना. I liked how I looked at Maria's wedding in the white. वो भी आप तस्वीर जशवानी वो भी मुझे I liked. मतलब मैं इसलिए भी आपसे पूछूं आपकी तो बहुत सारी लुक्स डॉक्यूमेंटेड है ना. Also the black outfit I also liked the black and white shawl के साथ वो I liked and hair documented मुझे नहीं ऐसे याद बिल्कुल भी. तो 3 तो आपने बता दी. 3 है बस ये. तो ये 3 तस्वीरें अभी तक हाँ. अगर आपको कुछ और याद आ गई बाद में तो हम तस्वीरें यहाँ पे चला ठीक देंगे यार ये आमना की 3 4 5 फेवरेट. ठीक है अपनी लुक्स हैं नहीं मुझे नहीं याद. अच्छा जी अक्सर आप जिनके साथ शो करती हैं आप ये आप लिख के लाए हैं सवाल या अब आप ऐसे चल रहे हैं लिख के लाए हैं आज कुछ ऐसे आप पॉइंटर्स आपने दिए आप जिनके साथ करती हैं उनके कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बड़ी बात होती है लेकिन आपसे रिलेटेड उन मुद्दों पे कभी कोई बात नहीं होती. क्या मतलब क्या किनकी बात तो 3 मेल एक्टर्स दैट यू हैव अ क्रश ऑन. और 3 मेल एक्टर्स दैट आई हैव अ क्रश ऑन. पाकिस्तानी. I don't have a crush on any male actor. Right? No. What wrong? You are. ये आमना के जो पिंक कुर्ते का रंग रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके चेहरे के ऊपर उनकी लाली में. तो आमना 3 मेल एक्टर्स दैट यू हैड अ क्रश ऑन at some point. Oh, at some point that I've had a crush on. हाँ चले ऐसे. Not today. At some point. अच्छा चले not today then. Okay. Crush. For me, crush is a very like. Yeah. Crush is a for very. you, it is a very divine. No, it's not a divine term. It's a very. Crush is not like somebody I would want to hang out with. Crush is somebody you want to have like a. That's what a crush means. Exactly. So. Have what? Have an unplatonic relationship with. That's what a crush is, right? In Pakistan? I think seriously nobody. Seriously nobody. The only person I've ever had a crush on is Imran Khan. And I still do. Iske alawa who? And certainly not Shehzad Nawaz जो आपके दिमाग में कर रहा है. आपके मतलब नहीं. I know you don't have a crush on Shehzad. Yeah, thank you for clarifying that. I do not have a crush. No. Okay. In all honesty, I know you don't have a crush on Shehzad. No. But the actual ones,
You're not gonna say? No. Which there are. You're not gonna say, or there are none? There are none. You're not gonna say, or there are No, there none? are none. Please clarify. No. Look, to have hots for people and to have a crush on them is also two different things. Okay, who do you have the hots I'm not for? going to say who are the hots for. Are you crazy? Are you crazy? Same. So we'll say you have crushes on people that you don't want to disclose. No, I And think let's be honest, we're not talking about Shehzad Nawaz. जिनकी बात नहीं हो रही. I think I'm too old to have crushes on people. But there are people. Okay, there are people who I've seen and I've thought I wish I was 30 years younger. Okay. Yeah, That's a hint. 30 years younger. 20. 20. That's a hint. That's a hint. Yeah, there are people who I look at and I really admire and they're good looking and all of that. And I think, yeah, I wish I was 30 years younger. ठीक है. अच्छा, 3 actors or actresses or celebrities जिनको मिलने के बाद आपका उनके बारे में ओपिनियन तब्दील हो गया. मतलब अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? Whatever. अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो आपकी मर्जी. अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि बुरा हो गया आपका ओपिनियन मिल गया. Yeah, you were expecting something of them and you were completely like, oh wow. शाहरुख खान. अच्छा हुआ या बुरा हो गया? अच्छा हो गया था. मजीद अच्छा हो गया. हाँ, मुझे लगा कि he would be aloof and arrogant, as a star of his stature would be. But when I sat down and had a conversation with him, he was very real. And for that half an hour, जबकि उनकी publicist ने manager ने कहा था कि you have 15 minutes, I was like okay. And then पीछे से book time. मैंने कहा मैं तो नहीं बोल रही, अब शाहरुख खान बोल रहा हो, आप उसको रोकेंगे तो नहीं ना कि रुक जाओ भाई हमारा टाइम अप हो गया है. So, but he was very down to earth, and I love that you could sit with him and it would feel like you're the only person in the room that he's talking to, and yeah, so I feel that मेरा बेहतर हो गया था after meeting Shah Rukh Khan. Then unfortunately बहुत ज़्यादा उनके साथ मिलके अच्छा नहीं होता. When you know to go for it. No, ये मेरी बर्थडे है. मैं नहीं चाहती कि बुरा हो. 2 people that I liked, I was fond of, and Shah Rukh is one of those people I was fond of, and then it was just reinforced कि आपकी fondness ठीक है. 2 other people that I was genuinely always fond of, and मिलने के बाद वो reinforce हुई. One is Fawad and one is Myra. Both of them. बिल्कुल अनहर्ड ऑफ, बिल्कुल यूनिक नाम. ऐसे नाम लेके आई है मार्केट में जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे. आमना ये 3 नाम, और वो भी मैं जो लेके आई. 3 नाम आप जो लेके आई हैं, यकीन जानिए कि मैं शॉक्ड राइट नाउ कंप्लीटली. मतलब आई एम टेकन अबैक. रियली शाहरुख खान, फवाद खान एंड माहिरा खान. वाओ. मतलब बेसिकली आपके कहने का मकसद है ये तीनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप उनसे मिली तो आप उनको और ज्यादा पसंद नहीं. पहले मेरा मकसद ये है कि मुझे ये बहुत पसंद थे, और ऐसे बाय द वे और भी लोग हैं जो बहुत पसंद थे, मिलने के बाद इतने पसंद नहीं रहे, जिनके नाम नहीं लेंगे, जिनके नाम मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये वो थे जो बहुत पसंद थे और मिलने के बाद भी पसंद रहे. तो ये वो हैं 3. What does something hot mean to you? Oh, something hot to me is my lifeline. It's literally my lifeline. It's not just my work, it's my passion, it's like 14 hours of my day, it's my commitment, it's my steady relationship for the last like 7-8 years. Yeah, it's my lifeline. And last सवाल, आखिरी question. जी. What do I mean to you? You are also my lifeline. No, I think when you and I started out, it was a relationship that was unexpected. और बहुत लोग कहते हैं कि कैसे हुआ है, मतलब how did you guys get together? But we never expected that we would become such good friends because we are so different. And I think alhamdulillah where we are today, like something hot means so much to me. So do you, and you're also my lifeline. Beautiful. ख़वातीन हज़रात, मेरे ख्याल में ये आमना ने आज मेरे बारे में जो बात की है कि आई एम हर लाइफलाइन, ये उनकी तरफ से मेरे लिए आज तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. आमना, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. जी शुक्रिया. आपको दोबारा 50वीं सालगिरह बहुत मुबारक. बहुत शुक्रिया. आई होप कि ये जो हमारा लिटिल सेशन था आस्क आमना का, इसमें से अब आप कुछ कटवाएंगे नहीं? नहीं, इसमें है ही नहीं कुछ कटने वाला. एज प्रॉमिस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सवाल करके. हालांकि मुझे इन सारे ज्यादातर सवालों के जवाब ऑलरेडी पता थे, मालूम कोई थे. ऐसा था जो आपको नहीं पता था?
मेरा नहीं ख्याल, बट मुझे इस बात का ज़रूर एहसास है कि हमारे जो ऑडियंस है जो आपसे इतना प्यार करते हैं, बहुत सारे इन सवालों के जवाब शायद उनको पहले नहीं मालूम। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्रस्टिंग मी टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन जी, थ्रू मी, जी। बिकॉज अक्सर होता है हम ना इंटरव्यू जब कर रहे होते हैं तो आप कोई भी बात होस्ट पकड़ के उसका कोई हाँ भी जी, तरोड़ मरोड़ जी, के जी, कोई जी। कोई बात कहीं की कहीं निकल जाती जी, है, जी, जी। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जी। आपने ये सारी बातें चूज की टू शेयर विद मी, एंड अगेन आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि आपकी 50वीं सालगिरह पे आपने ये स्पेशल सेशन शुक्रिया। मेरे साथ किया. As I said in my intro, I wish you, and I'm sure all our viewers also wish you nothing but the best of health. May Allah always and always and always keep you happy, healthy, Ameen. give you a long life. May you always be around to entertain us, make us Yes, laugh, yes, make yes. us happy. Yes, yes. May we continue to create content on something hot. Inshallah. May we continue to entertain all of you. Inshallah. And दोबारा आज बल्कि गा के मैं चाहूंगा हमारी टीम भी थोड़ा सा गाए साथ में. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, हमारी है ये आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आमना, हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज अ स्पेशल सेशन. मैं खुद स्पेशल कह रहा हूं, खुद आप मैं खुद मुझे कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? दिस वाज अ स्पेशल सेशन ऑफ आस्क आमना. होप यू एंजॉयड इट, एंड इंशाल्लाह विल सी, यू विल कंटिन्यू टू सी आमना ऑन आही, एंड यू विल कंटिन्यू टू सी द बोथ ऑफ अस on AHI as well as on something hot. See you soon, inshallah. Khuda Hafiz.